The Dixon Corporation has an outstanding one-year bank loan of $300,000 at a stated interest rate of 8%. In addition, Dixon is required to maintain a 20% compensating balance in its checking account. Assuming the company would normally maintain a zero balance in its checking account, the effective interest rate on this loan, formula अगर आपको याद हो, effective interest rate is equal to the stated rate over 1 minus compensating balance percentage. Simply आपको formula इस्तेमाल करें, direct answer आ जाएगा आपका. ठीक है, 8% is the stated rate and compensating balance percentage is given 20%. So 1 minus 20% should give you the answer. I have the calculator placed there. वकार calculate करें जरा please. वकार अपना माइक ऑफ कर लें, जब क्वेश्चन करना ना फिर पूछना, फिर ऑन करना. नहीं, माइक अपना माइक कर लोगे ना, मेरी वॉइस रिकॉर्ड होगी आपके. आप बिल्कुल ठीक है, देखो ना क्वालिटी बेहतर होगी. अच्छा, ओके, सो लेट मी गेट माई कैलकुलेटर, होल्ड ऑन. ओके, सो इट्स 8% अपॉन 1 minus 20%. So it's exactly 10%. So it means if there is 10% stated rate and 20% compensating balance requirement, then the effective interest rate is 10%. You can match with the answer given, it's D. Next. Okay, next question. Elan Corporation is considering borrowing $100,000 from a bank for 1 year at a stated interest rate of 9%. What is the effective interest rate to Elan if the borrowing is in terms of a discounted note? Alright, again the formula for a discounted loan interest, effective interest rate is equal to stated rate upon 1 minus stated rate. Simply put in the figures and you'll get your answer. It's 9% upon 1 minus 9%. Straight solve this figure and you get your answer. 9 upon 91%. It's about 9.89%. So it's 9.89%. So if you know your formulas, these questions are not a big deal. You can see this is the answer, D. So you can match up with the answer given at the end. D is the right answer. See, stated rate divided by 1 minus stated rate. Alright, next. 183. The Altman Corporation was recently quoted terms on a commercial bank loan of 7% discounted interest rate with a 20% compensating balance. Now this is an interesting question because there are two things. Number one is 7% discounting and at the same time 20% compensating balance. For the question like this, you have to assume that the loan is $100,000 or let's say $100. For the question like this, there are two operations. One is the discounting at 7%, and other is a compensating balance of 20%. So if you do with the formulas given in the previous section, मुश्किल होगा उससे solve नहीं होगा. आपको assume करना पड़ेगा कि $100 का लोन है, तो इस पे बैंक ने 7% के हिसाब से $7 पहले काट लेना है डिस्काउंटिंग के लिए, और इसमें से फर्दर $20 आपसे बैंक लेगा for compensating balance. It means bank will lend you only $73. So it means the available funds for your use are $73. So if you find the effective interest rate at EIR, the available funds 73, and on which you will be paying 7% interest, that is $7. So if you just equate this, you get your answer. 7 upon 73 into 100. 7 upon 73 into 100. So the effective interest rate is 9.59% approximately. So 9.59. So you can see this is the option D here. Any confusion? Okay, इसमें उसने कहा है कि if you have 7% discount interest rate with the bank and 20% compensating balance, तो इसमें हम खुद फर्ज करेंगे कि $100 का लोन था, उसमें से बैंक ने $20 कंपनसेटिंग बैलेंस काटना है और $7 अपना पहले इंटरेस्ट काट के रख लेना साल के स्टार्ट पे.
हमें फिर मिलेगा कितना 100 माइनस 20 माइनस 7 ओनली 73. दिस इज द यूजुअल फंड फिगर विद अस राइट. और इस 73 पे हमें इंटरेस्ट जो बैंक ने काटा वो $7 है. तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट अवेलेबल बैलेंस दैट वी कैन यूज इनटू 100. सो दिस इज 9.959. ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनेगा जी. ओके हो गया. ऑलराइट. वास्सलाम जी साजिद, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. अच्छा, ये अभी शुरू किए हमने 181 से स्टार्ट किया. ये 184 क्वेश्चन है. The Flasher Corporation was recently quoted terms on a commercial bank loan of 6% discounted interest with a 22% compensating balance. The term of the loan is 1 year. The effective cost of borrowing is rounded to. Again, the question we have done previously. You have to assume that the loan bank is granting you for $100. Bank will deduct two things from this loan. Number one, 6% interest. साजिद अपना माइक ऑफ कर दें. टर्न ऑन द माइक ओनली व्हेन यू नीड टू आंसर क्वेश्चन समथिंग. $6 is the interest deducted and $22 bank will deduct as a compensating balance. So bank will only hand you over 100 minus 22 minus 6, only the figure comes out to be $72, right? So you will be getting only $72 on which you will have to pay 6 interest. So effective interest rate would be the $6 that you are paying as interest and on a usable fund of $72. So remember, on the question like these, when you have been a discounted percentage and a compensating balance percentage, assume any number. I have taken a number to be 100. Simply deduct $22 the compensating requirement, $6 the bank interest. The net funds available for you are 100 minus 22 minus 6, that is 72. And you are paying $6 interest on the usable funds of 72. So if you just divide 6 with 72, multiply it with 100, you will get the effective interest rate. That should be 6 upon 72 into 100. So it gives you the figure 8.33. And that is the correct answer. If you match with the option given, it's D. And D it is. Alright, next. The red company has a revolving line of credit of $300,000 with 1 year maturity. The term called for 6% interest rate and 1.5% of commitment fee on the unused portion, which means the money which you overdraw from the bank will be charged at the rate of 6%, and the amount that you do not use of the available funds, they will be charged at the rate of 1.5%. So it means the average loan balance during the year was 100,000. So it means हमने पूरे साल में 1 लाख लोन इस्तेमाल किया और ग्रांटेड लिमिट जो कि हमें 3 लाख थी उसमें से 2 लाख इस्तेमाल नहीं किया. सो जो हमने इस्तेमाल किया लोन उस पर हमें सूद लगेगा 6% के हिसाब से, और जो हमने अमाउंट ग्रांटेड लोन यानी 3 लाख की लिमिट में से हमने इस्तेमाल नहीं की उस पर हमें पेनल्टी पड़ेगी. इसको कमिटमेंट फी इन अदर वर्ड कह सकते हैं, 1.5%. सो इफ यू सॉल्व दिस you will get 6% of 100,000 will give you 6,000, and 1.5% of 2 lakh it will be 1,000. So the total amount that you will be paying as interest or for this financing arrangement is 7,000. So C must be the right answer. C, 7,000, right? Done the same way. All right, now this is one of the best questions ever. An extremely जबरदस्त सवाल है. It's I would say it's about a 20-star question. पेपर स्टैंडर्ड नहीं है क्लियरली बिकॉज काफी देर में होगा, बट द थिंग इज इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके. The treasury analyst of Garth Manufacturing has estimated the cash flows for the first half of next year, ignoring any short-term borrowings, as follows. January May will be having inflow 2 million, outflow 1, then 2, outflow 4, then 2, then outflow 5, 2 in, 3 out, 4 in, 2 out, 5 in and 3 out. Okay. So what is the policy? Garth has a line of credit up to 4 million on which it pays interest at a rate of 1%. Right, of the amount utilized. Garth is expected to have a cash balance of 2 million on 1st January and no amount utilized on its line of credit. Opening balance आपका 2 million होगा, उस वक्त कोई आपका line of credit overdue balance नहीं था. Assuming all cash flows occur at the end of the month, फर्ज करेंगे सारे के सारे cash flows end of the month आते हैं,
हाउ मच विल गेट पे इन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मीन्स जून तक, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, कि आपने सारे के सारे मंथ्स को इकट्ठे लेके चलना है. ठीक है भैया. ऑलराइट, स्टार्टिंग फर्स्ट विद यू हैव गॉट $2 million विद यू. $2 million आपके पास ऑलरेडी है. ठीक है. जनवरी में फर्दर $2 million आपको मिला. ठीक है. मैं इसी से करता हूं, उसको मैं रब कर दूं, यहीं पे आपको सोल्यूशन दिखाया जाए ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ये काफी मैसी सा सवाल होगा, बट समहाउ करना है सवालों के अंदर. ऑलराइट, $2 million question. I mean, $2 million given in the question as opening balance, and you receive $2 million in the month of January, right? Which means out of the $4 million आपका $1 million गया, तो remaining balance कितना रह गया आपका? $3 million. ठीक है. लाइन ऑफ क्रेडिट आपकी $4 million है, on which you pay interest at 1% of the amount utilized. हमने कुछ यूटिलाइज नहीं किया इन फरवरी, क्योंकि हमारा फरवरी में $3 million प्लस में था. हमें जरूरत तब पड़ेगी जब हम नेगेटिव में आएंगे. तो अभी तक हम प्लस में चल रहे हैं. फिर ये $3 million जो जनवरी के एंड का क्लोजिंग बैलेंस था, ये फरवरी के स्टार्ट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा $3 million. $3 million and $2 million you get $5 million. आउट ऑफ दिस $5 million आपने $4 million पे कर दिया. अभी भी हम प्लस में बैठे हैं $1 million के. ठीक हो गया. अभी भी वी आर ऑन प्लस एट $1 million. यही $1 million आपका जब यहां आएगा एट द एंड ऑफ फरवरी, जो बैलेंस $1 million का है, ये मार्च के स्टार्ट का ओपनिंग बैलेंस होगा. एंड वी एड 1 + 2 $3 million. आउट ऑफ दिस 3 अब जरूरत पड़ गई हमें. नाउ वी नीड द हेल्प ऑफ द बैंक, कि हमारा इस महीने जो ओवरऑल बैलेंस था मार्च में $3 million था, और $2 million हमने $5 million पे कर दिया. इट मीन्स वी आर इन अ पोजिशन ऑफ अ -$2 million बैलेंस. ये -$2 million बैलेंस है. अब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है. आपकी जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी $4 million तक जाती थी. ठीक है. अभी तक उसमें सिर्फ हमने $2 million यूज किया है. अब ये $2 million जो यूज किया है, इसको साइड पे रख लें और यहीं पे सूद कैलकुलेट कर लें. इस $2 million का 1% आप लेंगे, और $2 million का 1% क्लियरली अमाउंट बनती है 20,000. तो स्ट्रेट में सिर्फ पूरी फिगर लिख रहा हूं, 20,000. ठीक है जी. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि $2 million हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और $2 million के आउटस्टैंडिंग बैलेंस में और नेगेटिव में चला गया ना, 20,000 इंटरेस्ट है. तो हमें इंटरेस्ट मिला के इस फिगर को देना होगा. इंटरेस्ट जो 20,000 पड़ा है, ये ऐड कर दिया जाएगा इस अमाउंट में. सो इट मीन्स द टोटल अमाउंट दैट इज ड्यू एट द एंड ऑफ मार्च इज $2,20,000. सो मैं इसको इस तरह लिखता हूं,